this is the superior vena cava. Superior vena cava divides into internal jugular vein and a subclavian vein. Right internal jugular vein, right subclavian vein. Left internal jugular vein, left subclavian vein. Talking about the arteries, this is the aorta, the arch of the aorta. At right side पे ये हमारे पास brachiocephalic trunk बना रहे हैं. Brachiocephalic trunk divides into internal common carotid artery and the right subclavian artery. Left side पे brachiocephalic trunk नहीं है. Directly arch of aorta divides into common carotid artery and the left subclavian artery. The common carotid artery at the upper level of the thyroid cartilage bifurcates into external carotid artery and the internal carotid artery. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मीडियली पड़ी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेटरली है जो ऊपर जाके एक्सचेंज हो जाएगी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से हमारा एक ब्रांच निकली है सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच सप्लाइज अ थायराइड ग्लैंड. दिस इज अ थायराइड ग्लैंड. दिस इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी ऑन बोथ साइड्स. ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन निकल रही है जो पूरे इसको ड्रेन कर रही है थायराइड ग्लैंड को. ओके, उसके अलावा ऊपर दिस इज द टंग. टंग के नीचे हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड है एंड दिस इज द submandibular gland. The mylohyoid muscle, the posterior part of the mylohyoid divides the submandibular gland into superficial part and a deep part. Mylohyoid muscle and this is a stylohyoid muscle नीचे वाला. और उसके अलावा यहाँ पे इंटरनल जगुलर वेन, यहाँ पे एक्सटर्नल जगुलर वेन, इंटरनल जगुलर वेन आर्टरीज पे बाइफरकेट हो गई हैं. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. This is the model of dural venous sinus, superior sagittal sinus. Superior sagittal sinus, confluence of sinuses that is present opposite to the internal occipital protuberance. Transverse sinus, sigmoid sinus. This is occipital sinus. This is superior petrosal sinus, present on the superior border of petrous part of temporal bone. This is inferior petrosal sinus. This is sphenoparietal sinus. All the sinuses are ultimately draining into the jugular foramen within the internal jugular vein. This is the post-central sulcus of parietal lobe. This is the post-central gyrus. It is divided, the area behind the post-central sulcus is divided into superior and inferior parietal lobules by a intraparietal sulcus. So this is the intraparietal sulcus dividing the parietal lobe into superior and inferior parietal lobules. This is the inferior parietal lobule that is invaded by the upward turn of the lateral sulcus as well as the superior and the inferior temporal sulcus that divides the inferior parietal lobule into anterior, middle and the posterior part. The anterior part is called the supramarginal gyrus. The middle part is called the angular gyrus. This is the external jugular vein, this is internal jugular vein and this is anterior jugular vein. So how the external jugular vein is formed? External jugular vein is formed by the posterior auricular vein and the posterior division of the retromandibular vein. ठीक है. उसके बाद जो होती है internal jugular vein is formed by the facial vein and the anterior division of the retromandibular vein. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आती है ये हमारे पास anterior जो jugular vein है और ये हमारे पास facial vein जो vein जा रही है ऊपर. ठीक है. उसके बाद muscles हमारे पास आते हैं. this is the sternocleidomastoid. ठीक है. और ये हमारे पास trapezius muscle है. ये हमारे पास posterior triangle है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आता है ये हमारे पास muscle है semispinalis capitis, ये splenius capitis, ये levator scapulae आता है और ये हमारे पास आता है स्प्लिनियस मीडियस और स्प्लिनियस पोस्टीरियर. इस पे यहाँ पे एंटीरियर नहीं है, वो कट हुआ है इसके अंदर. दैट्स ऑल. स्केलिनस मीडियस एंड स्केलिनस पोस्टीरियर. This is the tentorial surface of the brain. It has two main sulci. The medial most sulci is called the collateral sulcus. This is the collateral sulcus. Just lateral to the collateral sulcus is another important sulcus which is called the occipitotemporal sulcus. This is the occipitotemporal sulcus. The gyrus that is present medial to the collateral sulcus
is called the parahippocampal gyrus. This is the parahippocampal gyrus. The occipitotemporal sulcus divides the brain into medial and lateral occipitotemporal gyri. This is the medial occipitotemporal gyrus. This is the lateral occipitotemporal gyrus. This was the collateral sulcus, and this area of the collateral sulcus is called uncus. This is uncus, collateral sulcus, this is the parahippocampal gyrus, this is uncus.